सो चैप्टर नंबर 2 भी मैं इसी में कर रही हूँ. Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So in this class, we are going to start our chapter number 2, computer and its memory. So हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहले ही कवर अप कर चुके हैं. आज की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज गेन करेंगे और उसके मेमोरीज के बारे में जानेंगे. So basically, we are going to learn in this chapter about computer storage and computer storage devices. So different type of input devices are used to enter data into the computer, right? Now here we will learn that where these data and instructions are stored. Okay, so now let's get started. The computer system has different storage areas where it keeps data or information permanently or temporarily while working. This storage area is known as the memory of the computer. अब बच्चों देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट स्टोरेज एरियाज हैं जहां पे वो क्या करता है, डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली या फिर टेम्परेली स्टोर करता है जब हम काम कर रहे होते हैं. सो जो वो स्टोरेज एरिया है दैट इज कॉल्ड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. नाउ लेट्स सी कंप्यूटर स्टोरेज. कंप्यूटर स्टोर्स डेटा ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 digits, that is 0 and 1. Always remember it. कंप्यूटर हमारी लैंग्वेजेस को नहीं समझता, हिंदी नहीं समझता, मैथ नहीं समझता, कंप्यूटर नहीं समझता. वो सिर्फ 2 चीजें, 2 वर्ड समझता है. I mean 2 digits, 0 and 1. जो भी हम उसे टाइप करके दे रहे होते हैं वो क्या करता है, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ zeros and 1. Okay, you will know about it in your upcoming classes. Okay, each digit is called a bit. What does it called? Bit, and that is called binary digit. A bit is the smallest unit of computer. Combination of 8 bits make 1 byte, and 1 byte is used to represent 1 character of data. The CPU converts the data into binary digit before storing it. अब बच्चों आप सोच रहे हो कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो कंप्यूटर तो समझ जाता है? नहीं, कंप्यूटर उसे नहीं समझता. कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करता है तुरंत ही मशीन लैंग्वेज में. देन इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वर ट्राइंग टू से टू देम. ओके, सो जैसे कि बिट है, बिट आपका 0 और 1 होता है. बाइट 8 बिट्स होते हैं. लाइक आपने उसका 8 ग्रुप ऑफ पेयर बना दिया, 8 पेयर्स बना दिए. कंप्यूटर स्टोरेज इज मेजर्ड इन बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स एंड पेटाबाइट. जैसे आप कहते हो ना, आज हमें 1 GB डेटा मिला है, 100 MB बच गया है या 10 MB बच गया है, दैट इज बिट्स. ओके, सो नाउ 8 बिट्स मींस 1 बाइट, 1024 बाइट्स मींस 1 किलोबाइट यानी 1 KB, 1024. अब कभी भी ये मत कहना आपको 1 GB मिला है यानी 1000 MB मिले हैं. उसका मतलब है 1024 MB मिला है. Always remember करना. And 1024 KB means 1 megabyte, 1024 megabyte means 1 gigabyte, and 1024 gigabyte means 1 terabyte, and 1024 terabyte means 1 petabyte. Is it clear? Now let's see computer storage devices. So computer stores data in storage. Computers store data in devices called storage devices or memory devices. There are 2 types of memory devices called primary memory devices and secondary memory devices. So here computer consists 2 types of memory devices, primary and secondary. In case of primary, it has 2 types, RAM and ROM, and secondary, hard disk, CD, DVD, Blu-ray, pen drive and memory card. Now let's understand the concept of primary memory devices. So primary memory devices is also known as internal memory or main memory of the computer. CPU can directly read from and write on this memory. There are 2 types. फर्स्ट वन इज रैम एंड रोम. अब बच्चों प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये इंटरनल और मेन मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर की. सीपीयू क्या करता है? डायरेक्टली रीड करता है और राइट करता है इन मेमोरीज पे. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम. ओके, सो रैम क्या करती है? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली.
ओके, रैंडम से ही नाम समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, टेम्परेली। इट मीन्स द डेटा इज स्टोर्ड इन इट एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज नॉट शट डाउन. When we start the computer, the operating system is loaded into RAM. Any app that we open is also loaded in RAM. तो बच्चों जो RAM है वो आपकी हेल्प कर रही होती है जब तक आप प्रोग्राम में वर्क कर रहे होते हो, और as long as your system is turned on. When you will turn off it, so what will happen? Your data will get erased and will not get saved. ओके, सो आपको उसे सेव करना होता है कहां पर जाकर, अभी आपको पता चलेगा, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. दिस stores the startup instruction for the computer. It holds these instruction even after the power supply is switched off. Are you getting my point? So hence it is a permanent memory. These instruction cannot be overwritten but can only be read. Okay, so ROM. तो यहाँ पे बात हुई थी हमारे दो टाइप जो हमने मेमोरी के देखे, रैम एंड रोम. Okay, now did you know when we type some text on the computer, it is saved in the RAM, but when we shut down our computer, RAM gets cleared and everything in it gets erased. तो बच्चों आप क्या यहाँ पे क्या बात हो रही है बोलने की, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि जब हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो रैम के चलते हो रहा है हमारे, ठीक है, वो रैम में टाइप हो रहा है, पर जैसे हम सिस्टम बंद करते हैं तो रैम से वो क्लियर हो जाता है. बट अगर आप नहीं चाहते हो क्लियर हो तो आपको उसे प्रायरली सेव करना पड़ता है. नाउ व्हाई रोम इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी? because it saves the data, it does not lost the data as long as the system get turned off. okay, system बंद होने के बाद भी रोम में से आपका डेटा इरेज नहीं होता, बट रैम से आपका डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है. now let's see the secondary memory devices. Secondary memory is needed in the computer to store information for a long period of time. It is called external memory. The secondary memory is a permanent which holds the data even after the computer is shut down. Examples of secondary storage devices are hard disk, CD, DVD, Blu-ray, pen drive, memory card, etc. Hard disk, it is the main secondary storage devices that store large amount of data permanently, which can range from 500 GB to 5 TB. It is present inside the CPU box. Hard disk stores operating system software, application software and all other files folders saved in our computer. So बच्चों चाहे लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, आपको उसमें एक हार्ड डिस्क मिलता है. हार्ड डिस्क क्या करता है? हार्ड डिस्क आपका मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपके डेटा को चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो अमाउंट में वो स्टोर करके रखता है. इवन तो जो हार्ड डिस्क होते हैं वो अलग अलग रेंज में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 500 GB to 5 TB. Now let's see CD, that is compact disc. It is a portable storage device that stores data permanently. Its storage capacity is up to 700 MB. There are many types of CDs, for example CD-ROM, CD read-only memory, CDR, CD recordable and CD read-write. Okay, now question, what's the difference between CDR and CDRW? So try to find out yourself what is the major difference between both of them. Now let's move forward and let's see DVD, digital versatile disc. It is also a portable storage device. Okay, although CD and DVD looks like the same and same in size, but there is a major difference. DVD stores more data than CD. These are similar to CD, but these have more capacity to store data. Its storage capacity can be up to 17.08 GB. Okay, Blu-ray, it is a scratch resistant disc that can safely store the data for a long period of time. Long time. It uses blue violet laser light technology. Its storage capacity can range from 25 GB to 50 GB. Now after that you can see pen drive. It is a portable storage device too that can be carried in a pocket. It is also called flash drive or USB drive. We can use a pen drive to transfer data from a computer to another computer. Its storage capacity can be up to 1 TB. So pen drive बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है, आप इसे पॉकेट में रखकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर सकते हो, एंड वेरी इजीली यू कैन कनेक्ट टू एनी कंप्यूटर टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. Now memory card, so it is also known as multimedia card. It is the storage device generally used in mobile phones, digital camera, tablets. It can store data up to 128 GB. So here you can see memory card. You must have seen this card in your homes or somewhere at places. So memory card इस तरीके से दिखता है. Now let's see, did you know external hard disk is
connected externally to a computer through a USB port, just like a pen drive. It can store large amount of data just like an internal hard disk, but this can carried along. अब बच्चों, जैसे हमारे पास internal hard disk होता है, वैसे एक external hard disk भी आता है, which you can connect with the help of the USB, which is already connected to your hardware. Okay, माय बैड, दैट इज हार्ड डिस्क. ओके, हार्ड डिस्क से कनेक्ट होता है और इसमें आप बहुत ज्यादा ही डेटा स्टोर कर सकते हो, प्लस यू कैन कैरी इट एनीवेयर. Now vocabulary bit is the smallest unit of information used by a computer. Now you already gain one knowledge, that is computer doesn't understand human language. Okay, it's understand machine language. Whatever we give, whatever instruction we give to the computer, it converted into machine language. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. Now byte is a unit of information stored in a computer as equals to 8 bits. A computer memory is measured in bytes. USB, that is Universal Serial Bus, is the system for connecting other pieces of equipment to a computer. So बच्चों, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा. यहाँ पे जो मैं बिट्स और बाइट्स बता रही थी, पहले जो हमने सबसे पहला कंप्यूटर पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें पर्सन्स को, प्रोग्रामर्स को क्या करना पड़ता था, मशीन लैंग्वेज टाइप करनी होती थी. मशीन लैंग्वेज समझ में आ रहा है इंस्ट्रक्शन देने के लिए. बट इन टूडेज टाइम वी कैन टाइप इन एनी लैंग्वेज. अगर हमें कोई क्वेरी होती है, हम किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर लेते हैं. बट पहले के टाइम में लोगों को 0 और 1 के फॉर्म में टाइप करना पड़ता था, एंड दैट वाज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क, जो कि आज के टाइम में क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है. ठीक है, बट स्टिल कंप्यूटर और मशीन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. नाउ in a nutshell, here the computer system has different storage area where it keeps data or information permanent or temporarily while working. So computer stores data only in the form of two digits, that is 0 and 1. A bit is the smallest unit of computer, and combination of 8 bits make 1 byte, and CPU converts the data into binary digit before storing it. Computer storage is measured in bytes, kilobytes, megabytes, terabytes, and petabytes. There are two types of memory device, primary memory devices, and second one is secondary memory devices. Example of primary memory devices are RAM and ROM. Examples of secondary storage devices are hard disk, CD, DVD, pen drive, memory card, etc. So student, that's all for this chapter. I hope everything is clear to all of you. You have understood all the topics we have covered in this chapter. So now what you have to do is just revise the chapter and try out to solve the exercise. Okay, so I'm going to meet you in the next class with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye students.